ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री दत्तात्रेयाय नमः। अस्य श्री दत्तात्रेय वज्र कवच स्तोत्र मंत्रस्य किरातरूपी महारुद्र ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्री दत्तात्रेयो देवतः द्रां बीजम् आं शक्तिः क्रौं कीलकम् ओम आत्मने नमः। ओम द्रीं मनसे नमः। ओम आं द्रीं श्रीं सौः ओम क्लां क्लीं क्लूं क्लैं क्लौं क्लः। श्री दत्तात्रेय प्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। अथ करन्यासः। ओम द्रां अंगुष्ठाभ्यां नमः। ओम द्रीं तर्जनीभ्यां नमः। ओम द्रूं मध्यमाभ्यां नमः। ओम द्रैं अनामिकाभ्यां नमः। ओम द्रौं कनिष्काभ्यां नमः। ओम द्रः करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः। अथ हृदयादिन्यासः। ओम द्रां हृदयाय नमः। ओम द्रीं शीर्षे स्वाहा। ओम द्रूं शिखाय वसट। ओम द्रैं कवचाय होम। ओम द्रौं नेत्रत्रयाय वौसट। ओम द्रः अस्त्राय फट। ओम भूर्भुवः स्वरोमिति दिग्बन्धः। अथ ध्यानम्। जगदङ्करकुन्दाय सच्चिदानन्दमूर्तये दत्तात्रेयाय योगीन्द्र चन्द्राय परमात्मने कदा योगी कदा भोगी कदा नग्नः पिशाचवत् दत्तात्रेयो हरिः साक्षात् भुक्तिमुक्तिप्रदायकः वाराणसीपुरस्न्यायी कोल्हापुरजपादरः माहुरीपुरभिक्षासी सहेशायी दिगम्बरः इन्द्रनीलसमाकारः चन्द्रकान्तिसमद्युति वैडूर्यसदृशस्फूर्तिः चलत् किञ्चित् जटाधरः स्निग्धावलियुक्ताक्षो अत्यन्तनीलकनीनिकः भ्रूभक्षाश्मश्रुनीलाङ्कः शशाङ्कसदृशाननः हासनिर्जितनीहारः कण्ठनिर्जितकम्बुकः मांसलांसो दीर्घबाहुः पाणिनिर्जितपल्लवः विशालपीनवक्षाश्च ताम्रपाणिर्दलोदरः प्रथुलश्रोणिललितो विशालजघनस्थलः रम्भास्तम्भोपमानो रूरजानुर्पूर्वैकजङ्गकः गूढगुल्फाकूर्मपृष्ठो लसत्पादोषरस्थला रक्तारविन्दसदृश रमणीयपदाधरः चर्माम्बरधरो योगी स्मर्तगामी क्षणे क्षणे ज्ञानोपदेशनिरतो विपद्धरणदीक्षितः सिद्धासनसमासीन ऋजुकायो हसन्मुखः वामहस्तेन वरदो दक्षिणेनाभयङ्करः बालोन्मत्तपिशाचिभिः क्वचिद्युक्तः परीक्षितः त्यागी भोगी महायोगी नित्यानन्दो निरञ्जनः सर्वरूपी सर्वदाता सर्वगा सर्वकामदा भस्मोद्धूलित सर्वांगो महापातकनाशनः मुक्तिप्रदो मुक्तिदाता जीवन मुक्तो न संशयः एवं ध्यात्वानन्यचित्तो मधुवज्रकवचं पठेत् मामेव पश्यन् सर्वत्र समया सह सञ्चरेत् दिगम्बरं भस्मसुगन्धलेपनं चक्रं त्रिशूलं डमरूं गदायुधं पद्मासनं योगिमुनीन्द्रवन्दितं दत्तेति नाम स्मरणेन नित्यम् अथ पंचोपचारे संपूज्य। ओम लं पृथ्वी तत्वात्मने श्री दत्तात्रेयाय नमः। गंधम परिकल्पयामि। ओम हम आकाश तत्वात्मने श्री दत्तात्रेयाय नमः। पुष्पं परिकल्पयामि। ओम यं वायु तत्वात्मने श्री दत्तात्रेयाय नमः। धूपं परिकल्पयामि। ओम रं वह्नि तत्वात्मने श्री दत्तात्रेयाय नमः। दीपं परिकल्पयामि। ओम वं अमृत तत्वात्मने श्री दत्तात्रेयाय नमः। अमृत नैवेद्यं परिकल्पयामि। ओम सं सर्वतत्वात्मने श्री दत्तात्रेयाय नमः। ताम्बूलादि सर्वोपचारान् परिकल्पयामि। अनन्तरम् ओम द्रां इति मूलमन्त्रम् अष्टोत्तरशतवारं जपेत्। अथ वज्रकवचम्। ओम दत्तात्रेयः शिरा पातु सहस्राब्जेषु संस्थितः भालं पात्वांशूयेयः चन्द्रमण्डलमध्यगः कूर्चं मनोमयः पातु हम छं द्विदलं पद्मभू ज्योतिरूपोक्षिणी पातु
पातु शब्दात्मका श्रुति, नासिकां पातु गन्धात्मा, मुखं पातु रसात्मकः, जिह्वां वेदात्मका पातु, दन्तोष्ठौ पातु धार्मिकः, कपोलभत्रिभू पातु शेषं ममात्मवित्, स्वरात्मा षोडशाराब्ज स्थितः स्वात्मावतादगलम्, स्कन्धौ चन्द्रानुजः पातु, भुजौ पातु कृतादिभू, जत्रुणी शत्रुजित् पातु वक्षः स्थलं हरि, कादिठान्त द्वादशा पद्मगोमरुदात्मका, योगीश्वरेश्वरः पातु हृदयं हृदयस्थितः, पार्श्वे हरिः पार्श्ववर्ती पातु पार्श्वे स्थितः स्मृतः, हठयोगादियोगज्ञ कुक्षी पातु कृपानिधि, डकारादि फकारान्त दशारसरसीरुहे, नाभिस्थले वर्तमानो नाभिं बहिन्यात्मकोऽवतु, बहिनी तत्त्वमयो योगी रक्षतान् मणिपूरकं, कटिं कटिस्थ ब्रह्माण्ड वासुदेवात्मकोऽवतु, बकारादि लकारान्त षट्पत्राम्बुजबोधकः, जलतत्त्वमयो योगी स्वाधिष्ठानं ममावतु, सिद्धासन समासीन उरु सिद्धेश्वरोऽवतु, बादिशान्त चतुष्पत्र सरोरुह निबोधकः, मूलाधारं महीरूपो रक्षताद्वीर्य निग्रही, पृष्ठं च सर्वतः पातु जान्योन्यस्तक्राम्बुजः, जङ्घे पात्ववधूतेन्द्रः पात्वङ्घ्रि तीर्थपावनः, सर्वाङ्गं पातु सर्वात्मा रोमाण्यवतु केशवः, चर्मचरमाम्बरः पातु रक्तं भक्तिप्रियोऽवतु, मांसकरः पातु मज्जां मज्जात्मकोऽवतु, अस्तीनि स्थिरधीपायान् मेधां वेदा प्रपालयेत्, शुक्रं सुखकरा पातु चित्तं पातु दृढाकृति, मनोबुद्धिमहङ्कारं ऋषिकेशात्मकोऽवतु, कर्मेन्द्रियाणि पात्वीशः पातु ज्ञानेन्द्रियाणि अजः, बन्धून् बन्धुत्तमापायाच्च शत्रुभ्यः पातु शत्रुजित्, ग्रहारां धनचेत्र पुत्रादिशङ्करोऽवतु, भार्यां प्रकृतिवित् पातु पार्श्वादीन् पातु सारङ्गभृत्, प्राणान् पातु प्रधानज्ञो वक्ष्यादीन् पातु भास्करः, सुखं चन्द्रात्मकः पातु दुःखात् पातु पुरान्तकः, पशून् पशुपति पातु भूतिं भूतेश्वरो मम, प्राच्यां विषहरः पातु पात्वाग्रेयां मखात्मकः, यां यां धर्मात्मकः पातु नैऋत्यां सर्ववैरिहृत्, वराह पातु वारुण्यां वायव्यां प्राणदोऽवतु, कौबेर्यां धनदः पातु वैशान्यां महागुरु, ऊर्ध्वं पातु महासिद्धा पात्वधस्ताद् जटाधरा, रक्षाहीनं तु यतस्थानं रक्षत्वादिमुनीश्वरः। अथ करन्यासः। ॐ द्रां अंगुष्ठाभ्यां नमः, ॐ द्रीं तर्जनीभ्यां नमः, ॐ द्रूं मध्यमाभ्यां नमः, ॐ द्रैं अनामिकाभ्यां नमः, ॐ द्रौं कनिष्काभ्यां नमः, ॐ द्रः करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः। अथ हृदयादिन्यासः। ॐ द्रां हृदयाय नमः, ॐ द्रीं शिरसे स्वाहा, ॐ द्रूं शिखाय बसट्, ॐ द्रैं कवचाय होम, ॐ द्रौं नेत्र्याय बौसट्, ॐ द्रः अस्त्राय फट्, ॐ भूर्भुवः स्वरोमिति दिग्बन्धा। एतन्मे वज्रकवचं या पठेत् शृणुयादपि, वज्रकायः चिरञ्जीवी दत्तात्रेयोऽहं पूर्वं, त्यागी भोगी महायोगी सुख दुख विवर्जितः, सर्वत्र सिद्ध संकल्पो जीवन्मुक्तोऽद्वर्तते, इत्युक्तवान्तर्दधे योगी दत्तात्रेयो दिगम्बरः, दलादनोऽपि तद् जपत्वा जीवन्मुक्तः स वर्तते, भिल्लो दूरश्रवाणां तदानीं श्रुतवादिनं, सकृच्छबणमात्रेण वज्राङ्गो भवदप्यसौ, इत्येतत् वज्रकवचं दत्तात्रेयस्य योगिनः, श्रुत्वा शेषं शम्भुमुखात् पुनर्प्याह पार्वती। एतत् कवचमाहात्म्य वद्विस्तरतो मम, कुत्र केन कदा जाप्यं किं यजाप्यं कथं उवाच शम्भु तत्सर्वं पार्वत्या विनियोदितं। श्री शिव उवाच
शृणु पार्वती वक्ष्यामि समाहितमनाबिलं धर्मार्थकाममोक्षाणाम् इदमेव परायणं हस्तेश्वरत्पादाति सर्वैश्वर्यप्रदायकं पुत्रमित्रकलत्रादि सर्वसन्तोषसाधनं वेदशास्त्रादिविद्यानां निधानं परमं हि तत् सङ्गीतशास्त्रसाहित्य सत्कवित्वविधायकं बुद्धिविद्या स्मृति प्रज्ञा मतिप्रौढिप्रदायकं सर्वसन्तोषकरणं सर्वदुःखनिवारणं सर्तुसंहारकं शीघ्रं यशः कीर्तिविवर्धनम् अष्टसङ्ख्यामहारोगः सन्निपातः त्रयोदशः सन्नपत्यक्षिरोगः च विंशतिर्मेहरोगकः अष्टादशतु कुष्ठानि गलमान्यष्टविधान्यपि अशीतिर्वातरोगाश्च चत्वारिंशत्तुपैत्तिकः विंशतिश्लेष्मरोगः च क्षयचातुर्थिकादयः मन्त्रयन्त्रकुयोगाद्यः कल्पतन्त्रादिनिर्मितः ब्रह्मराक्षसवेताल कूष्माण्डादिग्रहोद्भवः सङ्गजादेशकालस्थः तापत्रये समुत्थितः अवग्रहसमुद्भूता महापातकसम्भवः सर्वे रोगाः प्रणश्यन्ति सहस्रावर्तनाद् ध्रुवम् अयुतावृत्तिमात्रेण बन्ध्या पुत्रवती भवेत् अयुतद्वितीया वृत्तया हयमृत्युजयो भवेत् अयुततृतीया चैव खेचरत्वं प्रजायते सहस्रादियुतादुर्वाक् सर्वकार्याणि साधयेत् लक्षावृत्त्या कार्यसिद्धिर्भवेत्येव न संशयः विषवृक्षस्य मूलेषु तिष्ठन् वैतिष्ठन् वैदक्षिणामुखा कुरुते मासमात्रेण वैरिणं विकलेन्द्रियम् औदुम्बरतरोर्मूले वृद्धिकामेन जाप्यते श्रीवक्षमूले श्रीकामी तिन्तिणी शान्तिकर्मणि ओजस्कामोऽश्वत्थमूले स्त्रीकामे सहकारके ज्ञानार्थी तुलसीमूले गर्भगेहे सुतार्थिभिः धनार्थिभिस्तु सुक्षेत्रे पशुकामैस्तु गोष्ठके देवालये सर्वकामे तत्काले सर्वदर्शितं नाभिमात्रजले स्थित्वा भानुमालोक्य यो जपेत् युद्धे वा शास्त्रवादे वा सहस्रेण जयो भवेत् कण्ठमात्रे जले स्थित्वा यो रात्रौ कवचं पठेत् ज्वरापस्मारकुष्ठादि तापज्वरनिवारणं यत्र यतस्यास्ति स्थिरं यद्यत् प्रसन्नं तन्निवर्तते तेन तत्र हि जपतव्यं ततः सिद्धिर्भवेद् दुर्लभम् इत्युक्तवान् च शिवो गौरीर्यहस्यं परमं शुभं यः पठेत् वज्रकवचं दत्तात्रेयो समो भवेत् एवं शिवेन कथितं हिमवत्सुताय प्रोक्तं दलादमुनये अत्रिसुतेन पूर्वं यः कोऽपि वज्रकवचं पठति इह लोके दत्तोपंशश्चरति योगिवरश्चिरायुः इति रुद्रयामले हिमवत्सखण्डे मन्त्रशास्त्रे उपासनाखण्डे शिवविजय सिद्धान्ते उमामाहेश्वर संवादे श्रीदत्तात्रेय वज्रकवच स्तोत्रं सम्पूर्णं श्रीदत्तात्रेयार्पणमस्तु।